So students, in the previous classes we have discussed regarding everything about the balance of payments, the structure of the balance of payments, the meaning of the balance of payments, and your various components, categories of balance of payments. Okay, I've told you all, everyone, that there are two accounts in the balance of payment. There is a current account, there is a capital account, and both the accounts have a debit side and a credit side. That means the debit side is your credit side is your receipts, and your debit side is your payments. Alright, so it is an account. So anything can happen. Either my debit side can be greater than my credit side, that means my payments, my foreign exchange payments to the rest of the world, it can be greater than the receipts of the foreign exchange. Okay, or the opposite situation can also happen, that my credit side of the balance of payment is more than the debit side of the balance of payments. That means the foreign exchange receipts that I am receiving are more, and foreign exchange payments that I am making are less. Okay, so these two situations are called as disequilibrium situations in the balance of payments. Alright, if I talk about the equilibrium situation of the balance of payments, okay, if I talk about the equilibrium situation of the balance of payment, then the balance of payment will be in equilibrium situation when your debit side and your credit side are equal. Okay, when your debit side and credit side are equal, that means your payments of foreign exchange are equal to the receipts of foreign exchange, or you can also write it as payments are equal to the receipts of foreign exchange. Okay, this is the case of equilibrium of balance of payments, right in everyone's side. Now, what the situation might arise other than this? Okay, it may happen that my debit and credit are not equal, or in the other sense, or we can also call it as that my payments and receipts are not equal. Alright, so what other situations might happen in these two cases? Either my payments will be greater than the receipts. I'm writing P for payments and R for receipts. Okay, either my payments will be greater than the receipts, the payments that I'm making to the rest of the world, or the other situation might arise where my receipts are greater than the payments of foreign exchange that I make to the rest of the world. When the payments are greater than the receipts, that means my debit side is greater than the credit side. It means that my debit side is greater than the credit side, and if my receipts are greater than the payments in the balance of exchange, that means my credit side is greater than the debit side. Always remember that. So, one thing you should always know, that every country works in the direction of achieving this, that the receipts of balance of payments must be greater than the payments that they are making to the rest of the world. Because every country wants to increase the buoyancy and of their foreign exchange reserves. They want to increase, they want to have more and more foreign exchange currency as their reserves. Okay, because it will increase helping in the assets of the country. If the country is having more foreign exchange, then it can fight the unforeseen contingencies in the future. Okay, so every country wants कि हमारे पास ज़्यादा foreign exchange reserve आए, but हमारे पास से foreign exchange reserve जाए कम. Okay, so every country wants their receipts of foreign exchange to be more than the payments of foreign exchange that they are paying to the rest of the world. That every country wants the credit side of their balance of payment to be more than the debit side. Alright, such situation is known as the favorable balance of payment. Okay, this surplus situation where the receipts of the balance of payments is more than the payments of the balance of payments. This situation is known as the surplus or a favorable balance of payment. Why it is called a favorable balance of payment? Because in this case, the foreign exchange reserves will increase
the country is receiving more foreign exchange and paying less foreign exchange. Alright, this is surplus or a favorable balance of payment. Every country wants to achieve this situation. And this situation, where my payments are greater than the receipts. That means the foreign exchange that we are paying to the rest of the world, it is more, and whatever we are receiving from the rest of the world, it is less. That means हमारे foreign exchange reserve में से, for example, this is my foreign exchange reserve. Okay, इसमें से ज्यादा आ रहा है foreign exchange और कम रहा है. Okay, so this will be a deficit situation. That means the foreign exchange is going more, the outflow of foreign exchange is more from our country than the inflow of the foreign exchange. So such situation no country wants. No country wants to pay more foreign exchange to the rest of the world and receive less foreign exchange from the rest of the world. Okay, so this situation is known as the deficit situation or unfavorable balance of payment or adverse balance of payment. So remember, when we are talking about the real disequilibrium in the balance of payment, okay, if I am talking about the real disequilibrium in the balance of payment, then I am talking about the adverse balance of payments. That means the situation of deficit, the situation when the payments to the rest of the world is more and the receipts from the rest of the world are less of foreign exchange. Unfavorable balance of payments. So here we have to discuss various causes of this adverse balance of payments or unfavorable balance of payments or deficit balance of payments. That what are the various causes why it happens that the balance of payment of various countries it becomes adverse, unfavorable, or it gets into deficit. That means why a particular country starts receiving less foreign exchange and they start paying more foreign exchange to the rest of the world. This we have to discuss. There are various causes that will lead to this situation. And if I'm talking about the unfavorable balance of payments or adverse balance of payments, then remember I'm talking about that more foreign forex outflow than inflow. That means there will be more foreign exchange outflow from the country and less foreign exchange inflow from the rest of the world in our country. So what are the various causes which will lead to such deficit, unfavorable or adverse balance of payment? Okay. The first cause is fall in foreign demand. Okay. We all know that we export goods to the rest of the world, we export services to the rest of the world, and we earn foreign exchange in return. But if a situation arises that जो foreign countries है जिनको हम goods और services export कर रहे हैं वही demand नहीं है हमारे goods की, so what will happen? We will receive less foreign exchange in return. All right. So fall in foreign demand means we are exporting any goods and services. We were exporting any goods and services, and what happened eventually in that country? My goods are not demanded now that much. My services are not demanded that much. Okay. For example, जो chicken curry work है, okay, पहले बहुत ज़्यादा export होता था इसका, because it was only India जो chicken curry work produce करता था at cheaper cost. But what China has started, China is also producing. It has also started producing the chicken curry work with the help of machineries and capital-intensive techniques. So they are producing cheaper chicken curry embroidery. So what happened eventually? जब हमारी goods की demand थी foreign country में वो fall होने लगी. कि हमारे यहाँ वो चीज महंगी बन रही थी और China was selling it at a cheaper rate. So obviously क्या होगा? जो cheaper चीजें होंगी वो foreign countries purchase करेंगे. So अगर हमारी कंट्री की गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में फॉल हो जाती है, so what will happen? हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. Okay, my exports will reduce. जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे, we will receive less foreign exchange. अगर हम अमेरिका को पहले कुछ एक्सपोर्ट करते थे और वो एक्सपोर्ट कम हो गया, that means हमारे पास कम डॉलर्स आएंगे. हमारे पास कम डॉलर्स आएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होगा वो इवेंचुअली डेफिसिट में चला जाएगा. ऑलराइट,
क्योंकि हमने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट देयर इज मोर फॉरेक्स आउटफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री से ज्यादा रहा है एंड इट इज कमिंग लेस इन आवर कंट्री. Then the second point is inflationary pressure in the economy. Okay, it is we are talking here about the home country, जहाँ से export हो रहा है. If in the home country where goods are being exported, all right, वहाँ पे अगर inflationary pressure है, वहाँ पे चीजें महंगी बन रही हैं due to any reason, there is inflation. So what the export industries will do? They will also supply, they will also export those goods to the other countries at high up prices. All right. अब हो सकता है ऐसा कि foreigners को वही गुड कोई दूसरी कंट्री चीपर रेट्स पे दे रही हो. So why would they purchase our goods? तो हमारी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन होगा, it will also lead to the deficit in the balance of payments because in the international market it will raise the price of our products. All right, and the foreigners will not be ready to purchase those products. Then coming to third point, developmental expenditure. Okay, it is majorly happens in your developing economies. Remember that the developing economies and the underdeveloping economies which are on the verge of development, which are on the path of development, क्योंकि उनके पास अपनी resources नहीं होती, they do not have enough capital resources, they do not have enough scientific resources, they do not have enough efficient human resource. So what they do, they have to import more and more capital machineries from the other developed nations. और जब हम यही इतनी महंगी machines, capital, softwares दूसरी countries से मंगाते हैं, तो हमारा import bill बढ़ जाता है. हमें उस country को payment करना पड़ेगा. फॉरेन एक्सचेंज में हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, दैट मींस हमारा जो डेबिट साइड है बैलेंस पेमेंट का, इट विल इंक्रीज एंड इट विल लीड टू द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ऑलराइट, रिमेंबर राइटिंग दैट मेजरली हैपेंस इन द डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज़ दे डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज. ऑलराइट, देन फोर्थ पॉइंट, increase in cost structure of export industries. See, there are export industries also in the country जो सिर्फ इसलिए goods बनाती हैं ताकि वो export कर सके. बहुत से लोग सिर्फ export के business में होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज के एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और हमारी कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाए, हम महंगा सामान बनाने लगे क्योंकि हमें रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है. सो व्हाट विल हैपन इन द इंटरनेशनल मार्केट? हम लॉस में तो सेल करेंगे नहीं फॉरेनर्स को, हमको भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस. ऑलराइट, वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस एंड देन सेल द प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट. व्हाट विल हैपन देन? Again, the demand will fall for our goods in the international market, and when the demand falls in the international market, we'll be able to export less. हम export कम कर पाएंगे, और जब हम export कम कर पाएंगे, तो foreign countries से जो पैसा आता है, foreign exchange reserves जो आते हैं हमारे पास, वो भी reduce हो जाएंगे, and my balance of payments will get into deficit. Alright, then decrease in supply. अगर ऐसा हो कि हमारी कंट्री में जो चीज हम डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे, उन्हीं चीजों की सप्लाई कम हो गई. ऑलरेडी द सप्लाई ऑफ दोस गुड्स व्हिच वी वर एक्सपोर्टिंग बिफोर, द सप्लाई ऑफ दोस गुड्स हैव रिड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल अभी अनियंस के साथ रिसेंटली यही हुआ था, अनियंस की सप्लाई इंडिया में बहुत ज्यादा कम हो गई थी. ऑल्दो इंडिया अनियंस को एक्सपोर्ट भी करता है डिफरेंट कंट्रीज को, लाइक बांग्लादेश को, श्रीलंका को, काफी एक्सपोर्ट करता है अनियंस. ऑलराइट, बट जब हमारी कंट्री में अनियंस की सप्लाई कम हो गई, तो हम क्या करेंगे? पहले हम अपने घर को खिलाएंगे कि हम पहले बाहर कंट्रीज को भेजेंगे? पहले हम इंडिया देखेंगे, गवर्नमेंट पहले देखेगी कि इंडिया में जितनी अनियंस की सप्लाई है पहले इंडियंस को मिलनी चाहिए, उसके बाद जितना सरप्लस बचता है देन वी विल एक्सपोर्ट दोस अनियंस. सो अगर किसी भी गुड की सप्लाई हमारी कंट्री में कम हो गई है, देन वी विल नॉट बी एबल इन द सिचुएशन टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो होम कंट्री में जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं, वो क्या खाएंगे? अल्टीमेटली में इंपोर्ट करना पड़ जाएगा. ऑलराइट, सो अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई हमारी कंट्री में इट हैज रिड्यूस्ड, देन आल्सो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट. और जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अगेन there is a cycle that the exports, the credit side of the balance of payments will be reduced. Then this sixth point, that is our appreciation in the exchange rate. This appreciation, depreciation
revaluation and devaluation. These 4 topics will study when I teach you foreign exchange rate because it is interrelated. जब तक हम वो नहीं पढ़ाएंगे ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा. Alright. So I am skipping this point. Write it somewhere. After teaching the revalue exchange rate, I will come to this point. Then only you people will understand. Now coming to next point, increase in debt burden. Okay, increase in debt burden. Debt burden, we all know debt का मतलब क्या होता है. हमने किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया हुआ है. बहुत सी कंट्रीज एक दूसरे से लोन्स लेती हैं, दैट इज जनरल. जैसे हम एक दूसरे से लोन्स लेते हैं, ऐसी फॉरेन कंट्रीज आल्सो दे टेक लोन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ऑलराइट, इंडिया में बहुत से लोगों से लोन लेता है, इंडिया बहुत से लोगों को लोन. ऑलराइट, एंड इंडिया बहुत से लोगों को लोन देता है. ऑलराइट, तो अगर हम as a country we are taking more loans from other countries, अगर हमने ज्यादा लोन ले लिया डिफरेंट कंट्रीज से, तो क्या होगा, हमें बहुत इंटरेस्ट पेमेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि लोन को फ्री में तो देंगे नहीं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमें लोन लेने में. तो हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गोस फ्रॉम आवर अकाउंट फ्रॉम आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड लीड्स टू डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. देन डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट. This topic, this point I have to explain to you by discussing demand. Can anyone tell what is demonstration effect? Yes. Urvashi, you can. What is demonstration effect? Unmute your mic. Do you know? Who knows? Raise your hand. Demonstration effect का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास रहने वाली सोसाइटी का कंजम्पशन पैटर्न फॉलो करने लगता है. दैट इज डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट. दैट आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इंडिया में. इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट होता है. लोग एक दूसरे को देख के सामान खरीदते हैं. इन्होंने ये लिया, ये लेंगे, इन्होंने ये लिया तो इससे अच्छा लेंगे. ऑलराइट, इन्होंने अपनी लड़की की शादी में 10 लाख का दहेज दिया तो 20 लाख का देंगे. ठीक है, तो ऑल दीस थिंग्स आर योर डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट. So how it leads to the adverse balance of payment? See, Indians majorly they try to follow the pattern of foreign countries. हम लोग को foreigners से copy करने का बहुत शौक, Indians especially. So what they do? हम लोग को imported goods ज़्यादा use करना. लोग काफी लोग हैं जो rich people हैं. They use imported goods, imported cosmetics, imported clothes, and many things. सब कुछ उनके घर में इम्पोर्टेड ही होता है. ये भी बहुत बड़ा रीजन है हमारी कंट्री में डेफिसिट आने का कि इंपोर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. कुछ कंट्रीज मतलब हम परचेज करना चाहते हैं कि मुझे अमेरिकन कंपनीज का ये परचेज करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, लग्जूरियस कार्स दैट वी इंपोर्ट. इन सब से क्या होता है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, what will happen? We have to pay more foreign exchange to the rest of the world and the balance payment will come into deficit. Simple. Then population pressure, it is very relevant to India. If there is more population pressure, what will happen? पहली बात तो जितना भी हमारे पास है वो हमारे पास सप्लाई कम होगी. ऑलराइट, पहले हम अपने कंट्री को खिलाएंगे, कंट्री के लोगों को खिलाएंगे और उसके बाद अगर खत्म हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंपोर्ट क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. तो पॉपुलेशन प्रेशर से बहुत ज्यादा इससे कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं. पॉपुलेशन प्रेशर लीड्स टू द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इफ द होम सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट, whatever is being supplied in our country, whatever is being produced in our country, if it is not able to satisfy the whole consumers in the economy, what will happen? We will not able to export. और जब वो भी खत्म हो जाएगा, we have to import. उसके ऊपर से हमें import करना पड़ जाएगा. जब तो exports नहीं हो रहे हैं, foreign exchange आ नहीं रहा है, दूसरी बात import करना पड़ जाएगा, foreign exchange देना पड़ जाएगा different countries को, कितनी population की वजह से. So it will also lead to deficit in the balance of payment. All right. Then political factors, there are various political factors also. Various international organizations, they put sanctions on various countries. किसी country ने कुछ terrorist activity का साथ दे दिया, कुछ कर दिया, तो international organizations उसके ऊपर कुछ sanctions लगा देते हैं. कुछ तो वो countries import export जैसे लीबिया पे लगा था या बहुत सारी countries पे लगता रहता है internationally. So इससे भी उन लोगों के balance of payment बहुत adversely affect. Okay, so these are the 10
balance of payments. So I cannot say that learn any 4 because many times these questions have been asked indirectly. So you should be knowing each point. अगर indirectly भी पूछ लिया, so you should be in the situation to write the answer. But at least जो लोग ये पूरे 10 पॉइंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, एटलीस्ट लर्न 4 विद एक्सप्लेनेशन, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Yes, sir. Yes, Sir, what? second point